system working? Are we calling each other? YouTube is live streaming. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Savasahunam. जय जिनेंद्र सभी को. हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय. So first take summaries and then we'll... Can I do the summary first? Because I get into something else, so I don't want to. Sure, that's what I just said. We'll do the summaries first. So go ahead, Shikha. Actually, it is Priyaji first and then Shikhaji. Oh, okay, that works. Yes, ma'am. It's mine first. And just say which pages you're doing and then. I'm जय जिनेंद्र सभी को. मैं समरी पेज नंबर 44 से 48 5 पेजेस का कर रही हूँ. फिर आगे शिखा जी करेंगे. तो इन पेजों में ऐसे बताते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार एकांत और अनेकांत दोनों में ही दो प्रकार के होते हैं, जैसे सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, निरपेक्षा नय निरपेक्ष नय और सापेक्ष नय दोनों ही सम्यक एकांत है. नय का समूह. निरपेक्ष और सापेक्ष प्रोनाउंस करो. निरपेक्ष सापेक्ष. निरपेक्ष नय और सापेक्ष नय दोनों मिथ्या एकांत है और सम्यक अनेकांत उनका समूह है, जैसे कि सापेक्ष के नयों का समूह. तो ग्रुप ऑफ सापेक्ष विल फॉर्म द सम्यक अनेकांत और निरपेक्ष नयों का समूह मिथ्या अनेकांत है. फिर बिना अपेक्षा के वस्तु का स्वरूप नहीं देखा जा सकता. So the word that you're having trouble pronouncing, sapeksh, it's sapeksh मतलब अपेक्षा के साथ, और निरपेक्ष मतलब बिना अपेक्षा के, without अपेक्षा and with अपेक्षा. Okay. फिर आगे सम्यक अनेकांत अर्थात ऋतु प्रमाण की दृष्टि से अगर विचार करें तो कहीं कोई भी कार्य की सिद्धि 5 समवायों है और जो कार्य की सिद्धि का कथन सम्यक एकांत होता है. फिर क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं. फिर लेकिन कई लोगों को सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद न जानने के कारण क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है, स्पेशली काल संबंधी एकांत. फिर प्रश्न यह आता है कि अगर लोगों को काल संबंधी एकांत ही क्यों नजर आता है, जबकि क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं, भाव संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं. और जवाब इस प्रकार है कि जब क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है. I'm sorry ma'am, it's a power off. Just a second ma'am. It's okay, you can keep speaking, Priyaji, if your phone or laptop is on. Well, I guess can I say without video on? Yeah, just say without video. Yeah. Yes ma'am, thank you. जबकि क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप ये कहा गया है कि जिस द्रव्य को जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जिससे होनी होगी उसी द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से वह वैसे ही होगी. उक्त
व्याख्या में काल के साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, भाव, निमित्त वह विधान भी निश्चित बताया गया है। क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया है, जबकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया है। फिर लोगों को काल पर ही ऐतराज क्यों होता है? इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी को कार्य जल्दी होने की उतावलापन होता है। आज की दुनिया इतनी जल्दी में है कि गहराई में जानने का अवकाश ही नहीं है। जब अपने जीवन में सिर्फ दौड़ ही लगा रहे हैं, इस व्यस्त जीवन में वह यह भूल गया है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह ये जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है, आदि विषयों पर विचार करने की भी फुर्सत नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतवाद का एकांत नजर आता है, तो कई लोगों को भाग्यवादी दृष्टिकोण मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियतिवाद, क्रमबद्ध पर्याय और दैववाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो होना है सो होगा, ऐसा विचार करना पुरुषार्थहीन बनाता है। फिर that's it, मैम। आगे की समरी शिखाजी will continue. Hemal ji, I just check your texts in chat in between. When people are pronouncing, you will be better. Okay, Shikhaji, आप लीजिए. I'm going to summarize from page 48 to 53. मुझे लो वॉल्यूम आ रहा है कि सबको लो वॉल्यूम आ रहा है शिखा का? Yeah, us also can't hear Okay. her. Is it still low? Now better. it's better. Okay, I'll speak like this. So, क्रमबद्ध पर्याय का मनन चिंतन गंभीरता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक व वीरता पूर्वक ही किया जा सकता है। इसमें कहीं भी पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है, अपितु सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है। कुछ लोग बात करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय इज जस्ट सोली डेस्टिनी, whereas other things that it is whatever in the luck is going to happen. But जो होना है ऐसा ही होगा, ऐसा सोचने से तो इंसान पुरुषार्थहीन बन सकता है। बट सम्यक दृष्टि जीव यह जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत ही है। जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस वस्तु की जो पर्याय होनी है वही होती है और उसे कोई भी टाल नहीं सकता। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। इसलिए पूर्व पर्याय से नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होता है और कुछ उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, भाव व काल भी नियत है। जैसे किसान कितनी भी मेहनत कर ले पर वो समय से पूर्व अपने गेहूं को नहीं पका सकता, जब सही समय आता है तभी वो गेहूं पकता है। सम्यक दृष्टि जीव देवता, व्यंतर आदि में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर ही नहीं सकता तथा जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में, जिस विधान से और जिस निमित्त पूर्वक जैसी होना है वैसी ही होती है, उसे इंद्र जैनेन्द्र भी नहीं पलट सकते, तो व्यंतर तो साधारण देवी देवताओं की तो बात ही क्या। कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण माने गए हैं, बट पुरुषार्थ को विशेष स्थान प्राप्त है। एंड जिनमत में मोक्ष का उपाय कहा गया है कि जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का कार्य करता है, उससे काल लब्धि व होनहार हुए और कर्म के उपशम हुए तो वह ऐसा उपाय करता है, इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय कर सकता है। फिर एक और पॉइंट है विच एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ काल लब्धि। मुक्ति मार्ग कार्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता में काल लब्धि और अन्य समवायों के साथ पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी मुक्ति के मार्ग में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उसमें कुछ भिन्न ही है। That's what my summary was.
Very good. Very good. अच्छा किया. I do want summaries to be very short. नहीं तो हम आधा क्लास वही करते रह जाएंगे. So the gist is कि even though यहाँ तो pages and pages हैं, but what are the just the few points that you gathered, right? So your opening was very good, Shikha, कि हम हमेशा वो होनहारी कर लेते हैं, because that's the whole gist of this book. Is Krambaddha Paryay is not destiny alone. Honar is destiny, and all the other 5 samvai are equally important, and they should be considered. So that's the main thing that should be the main takeout out of this whole book. That whenever we think of Krambaddha Paryay, we always consider everything else together. Otherwise, we will become Purusharthin people, and it definitely does not discourage Purusharth. So, and then of course, everything else is pretty much to support that. All the references and examples are all, to support that. Okay. Chalo. So let's start with Dolly ji. Aap padhna shuru kariye. And announce the page number and paragraph also when you start. Knowledge, it is page 44, and you will start with Kaha bhi hai. Okay, fine. 54 or 44? 44. Because I did summary from 48 to 53. You might be on the PDF. This is the actual textbook. Acha, I'm on actual textbook. So we are on page 44. It's 54. Even on textbook, it's 54. I No, think it is so, no? 44 on mine. No, it's- you were probably couple week classes before ka tag dekh rahe ho. Oh, sorry. I 53. apologize. Everybody is correct. It's Yes. page, I thought it was page 53. Yeah, we are starting on page 53 at Ukta Second. Kathat mein Pandit Todarmal. Correct. Correct. Second Okay. paragraph. Go ahead. Dolly. Just a second, I'll just be there. Okay, so it's page number 53, and where do I begin? Okay. Second Second paragraph. paragraph. Yes. Ukta And Katha. read like 3 to 4 pages. It's up there. Okay. And everybody pay very close attention when she speaks. Right. So this is page number 53, second paragraph, and I begin. उक्त कथन में पंडित तोडरमल जी ने कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि अन्य कारणों की भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है। वस्तुतः पांचों समवायों का समवाय ही कार्य का उत्पादक है। यह कहना कोरी कल्पना ही है कि पांचों समवायों में से यदि एक भी नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य होना हो और कोई समवाय न मिले। जब कार्य होना होता है तो सभी समवाय होते ही होते हैं। पुरुषार्थ को मुख्य करके यह बात पंडित तोडरमल जी ने बहुत ही स्पष्ट लिखी है। पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पंच समवायों में कोई परस्पर संघर्ष नहीं है, अपितु अद्भुत सुमेल है। अतः यह कहना कि यदि होनहार न हुई या काल लब्धि न पकी तो पुरुषार्थ से क्या होता है, या निमित्त नहीं मिला तो होनहार क्या करेगी या पुरुषार्थ क्या काम आएगा, ये बातें मानसिक व्यायाम के अतिरिक्त कुछ मायने नहीं रखती। वैसे तो पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। सर्वत्र ही अन्य समवाय सापेक्ष पुरुषार्थ का साम्राज्य है। मुक्ति मार्ग रूपी कार्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता में भी काल लब्धि आदि अन्य समवायों के साथ साथ पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी मुक्ति के मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उसे कुछ भिन्न ही है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस मैम। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की भाषा टीका में छंद 9 के भावार्थ में पंडित तोडरमल जी ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार की है। पुरुष इज इक्वल्स टू उत्तम चेतना गुण में से ते मीन्स स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। अर्थ अर्थार्थ प्रयोजन, इस प्रकार उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर उसमें ही प्रवर्तन करना है। प्रयोजन जिसका
उसे पुरुषार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुक्ति के मार्ग में आत्मानुभवन की प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा की स्थिति में तो उक्त पुरुषार्थ विशेषकर जागृत होता है, क्योंकि अनादिकाल से जगत के परिणमन को अपनी इच्छानुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब यह अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता, तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्मा सन्मुख होता है। और जब यह श्रद्धा बनती है कि मैं अपनी क्रम नियमित पर्यायों में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्याय पर से भी दृष्टि हट जाती है और स्व स्वभाव की ओर ढलती है। दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मानुमुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त इस जगत को पर में या पर्याय में कुछ फेरफार करने में ही पुरुषार्थ दिखाई देता है, किंतु पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर स्व में स्थिर हो जाने में पुरुषार्थ नहीं दिखता। सर्वज्ञ भगवान पर में वह अपनी पर्याय में भी कुछ भी फेरफार नहीं करते, तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए? क्या उनको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है? क्या उनके मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है? उनके वीर्य गुण का पूर्ण विकास हो चुका है, फिर भी क्या वे अनंत वीर्य के धनी अर्थात पूर्ण पुरुषार्थी नहीं है? पर मैं वह पर्याय में कुछ भी फेरफार किए बिना ही जब वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? ये कुछ प्रश्न है उनके सामने जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय मानने में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य है। प्रश्न: जबकि सभी क्रमबद्ध है और उसमें जीव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर जीव में पुरुषार्थ कहाँ रहा? उत्तर: सब कुछ क्रमबद्ध है। इस निर्णय में ही जीव का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट है, किंतु उसमें कोई परिवर्तन करना आत्मा के पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। भगवान जगत का सब कुछ मात्र जानते ही है, किंतु वे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तब क्या इससे भगवान का पुरुषार्थ परिमित हो गया? नहीं, भगवान का अनंत अपरिमित पुरुषार्थ अपने ज्ञान में समाविष्ट है। भगवान का पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं। पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है, इसीलिए उसका कार्य जीव की पर्याय में होता है, किंतु जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता। जो यह मानते हैं कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दशा आत्मा के पुरुषार्थ के बिना होती है, वह मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी प्रतिक्षण स्वामी स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है। अहो, जिनका पूर्ण ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है, वे केवल ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञान होता है। ऐसी प्रतीति करने पर स्वयं भी नीच दृष्टि से देखने वाला ही रहा। ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्तृत्व अथवा रागादिक सब कुछ अभिप्राय में से दूर हो गया। ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से ज्ञान की पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पर का कर्तृत्व मानता और कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। Ma'am, we are not understanding the meaning of ज्ञातृत्व, but anyways, later on. Atutva means knowing, or Okay. Katutva means doing. Sorry. Sorry, what's the knowing and what's सर्व carry on. सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा है वही होता है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता। इस प्रकार जो मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हे भाई, तू किसके ज्ञान से बात करता है, अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है, तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया है, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय न हो, यह हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। तूने अपने तर्क में कहा है
कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है, तो वह मात्र बात करने के लिए कहा है अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है? पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर, और यदि जस्ट अ मिनट, और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता है तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ ही जाता है। सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है, तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कहाँ रहा। सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है, और केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझ में प्रकट नहीं हुआ। केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें ही करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे। यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ न आए, यह हो ही नहीं सकता। गहराई से विचार करें तो अगर क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। अब रही परकर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे यह अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है, सो वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से पर कर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ का जागृत होना ही है। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया है। वे पर कर्तृत्व और पर्याय के हेर फेर को ही पुरुषार्थ माने बैठे हैं। उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप संस्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है। अतः उनसे पुरुषार्थ से सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है। आचार्य Okay, thank you. I know it can get tiring reading 5 pages. No problem at all, ma'am. Okay. Prabhaji, can you go paragraph by paragraph and just tell us what the gist might be of the paragraphs? Honestly, here there's no need to go paragraph by paragraph unless you guys have any particular words to ask. And I'll tell you the of this whole thing we read is सबसे बड़ा पुरुषार्थ। पहले तो उन्होंने पुरुष की डेफिनेशन बताई, राइट? पुरुष मीन्स आत्मा बेसिकली, राइट? और अर्थ, रिमेंबर वी सेड, पहले हमने बिगिनिंग में पढ़ा था काम, अर्थ, मोक्ष, कौन से ये चीजें। अर्थ मीन्स, हाँ, सो अर्थ मीन्स बिजनेस, राइट? द बिजनेस ऑफ आत्मा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई पुरुष अर्थ मीन्स बिजनेस ऑफ आत्मा. So that the word itself says that that is the true Purusharth. Whatever effort you do to get close, be with yourself, basically, not even get close to or anything. Just that you are, that's it, right? So that is the ultimate Purusharth. Now, loosely, any effort you make is also called Purusharth. And it's okay, that also applies in general when we talk about five samvaya in any other than Atma work also. Now, so, okay, so let's go on. We started on page
So let's go on page 55, right? Page 40, 53 pe, Page 53, Dolly ji, at the last paragraph, she went, oh, wow. And I went, oh boy, I've missed it. तो वैसे तो हाँ। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। सर्वत्रीय अन्य समवाय सापेक्ष पुरुषार्थ का साम्राज्य है। नहीं, that means always anya samvay, there is 5 samvay, right? So other than purusharth, the other 4 samvay sapeksh with reference to purusharth ka samrajya hai. That means ki when all other things happen, Which that paragraph is this? I'm so sorry. I'm lost. last paragraph, is that the one you wanted, Rupal? 53, the one वैसे तो पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य So we are on page 53. On Yeah, which page is why Prabhaji, please go paragraph by paragraph in correct order, just so that we don't go back and forth. It will become very confusing even with the video Okay. for others. Started with page 53, ukt kathan mein niष्पन्नता के में पुरुषार्थ को प्रदान. So what he's saying is in the following pages, we are going to talk about purusharth, okay, primarily. That doesn't mean the other 4 samvaya are not important. So you would prioritize purusharth, and then with reference to that, we're going to talk about kal labdhi and other reasons that happen, you know, when any work happens. Prabhaji, why they are calling it ये बातें मानसिक व्यायाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है? What is this मानसिक व्यायाम over here? Basically, mansik vayam means just a mental Activity. Exercise. It's a mental exercise. So what is mental exercise? यदि होनहार न हुई या काल अवधि न पकी तो पुरुषार्थ से क्या? So And all, basically, people argue about these things. what are they arguing about? That's You what know, I when want to know. it happens, they will say, "Oh, ऐसा होना ही नहीं था, तो कितना भी पुरुषार्थ तुम कर लो, नहीं होगा, this, that." So they're basically arguing about Krambaddha Paryay and essentially saying if that exists, then why are we doing Purusharth? That's what the whole argument they're Or, arguing. like a lot of times people, अभी इसका काल ही नहीं पका था इसलिए नहीं हुआ, अभी इसका ये नहीं हुआ. Like those are all mental exercises. Once you understand this thoroughly, no questions should arise pretty much. And when you think about it, आज जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ. So because all 5 samvayas didn't happen towards the task that I wanted to do. So it didn't happen. You don't say कि destiny नहीं था या काल नहीं था. Oh. That So don't pick any one. It's always all 5 that didn't come yes, together. Okay. everything, all other talk is just mental exercise is what he's saying. Oh, and then that's the paragraph Rupal was asking about. वैसे तो पुरुषार्थ के बिना. So what he's saying is कि everything is, because here they already announced that Purusharth is going to be they're going to focus on Purusharth more. So they're saying for any work to happen, Purusharth has to happen, right? So Anya Samvay with inclusion of other Samvais, other 4 Samvais, Purusharth will happen. Now Murti Marg Rupi Karya ki Utpatti. Now what is your Karya? Is Mukti Marg, right? Going to the process of moksha. Because see, any time you apply 5 samvaya, you have to know what your work, what your task is. Prayojan. Yeah. So in this case, karya means task. So mukti marg rupi task ki utpatti, sthiti, vriddhi or punta mein bhi kal labdhi adi anya sam. So whenever they say adi, that means all 5 samvaya के साथ 7 पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है. फिर भी मुक्ति के मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उसे कुछ भी नहीं है. What they're saying is, in the mukti marg, a lot of times people will say पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करना 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 is like, you know, स्वाध्याय करो 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 इसकी भाषा होती है. But that's why they're explaining then what the true Purusharth word means and what it is. And Prabhaji, what does this sentence mean? सर्वत्र ही अन्य समवाय सापेक्ष पुरुषार्थ का साम्राज्य है. Matlab always the Purusharth is with all the other 4 samvayas. It's never alone. All 5 are the samrajya.
No, Samrajya means Kingdom. kingdom, right? So what they're saying is always the kingdom of Purusharth will be with all the other four samvais. So sapeksha means with respect to. With respect to. It's not Purusharth alone is never going to be the case, is what all they're trying to focus on. Even though right now they're focusing on Purusharth in the next few pages, but you have to assume that it's always with the other four. So whenever Purushartha kingdom with respect to other five. So think about it. I'm talking about a king. Now, can you really talk about a king without its kingdom? no, Without No. its people, without its, No. all the other aspects? Bottom, that's the gist of this sentence. So in the same way, you can never talk of Purusharth by itself. It's always with the other four. Yes. And same That's would what that sentence same means. would apply to, Honhar, everything. Right now, we are prioritizing Purusharth in these 2 pages. But they're saying don't take that alone. It goes along with the other 5. On page 54, Prabhaji, I have one question which is not clear to me. It is the first, second, third, fourth, fifth, sixth one. दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में अंतमुखी आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। What does that last sentence mean? श्रद्धा के काल में. Okay, so what they're saying is the main Purusharth is to look inwards, right? The first sentence means that. Now, even the ones who believe properly in Krambaddha Paryay, for them also, so whenever the time comes, that time he will be in Atmonmukhi, means towards in Atma, Anant Purusharth hone ka और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है. So those who believe in this, to understand Krambaddha, for them it is a very big purusharth to even get samyak drishti, right? Because why? Because number one, you have to understand and believe in all these principles, yet not be impatient. My God, now I understand everything. I understand the Krambaddha Paryay. I understand the Vastu Swatantra Paryay, all these things, but yet I'm not, but fir mujhe kyun nahi hua? This happens to the biggest of Pandits, even those who understand all this so well. अरे हम इतना स्वाध्याय करते, इतना पढ़ा रहे, इतना फिर भी हमको क्यों नहीं हुआ? And that is not the true understanding of Krambaddha Paryay. Because it will still happen by its own path samvai. So you cannot just because मैंने इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्योंकि उसका काल सब कुछ तो साथ में होगा ना. जब काल आएगा तो हो जाएगा. That's So why remember I told you guys. we are thinking I'm doing so much purusharth, so I deserve to get this. Is the thought. Yes, and that's why is okay. it not Deserve happening? to get it is okay, but when I get it, is going to be is predetermined, and it will happen when it will happen. There's no need to get impatient. See, you did your nirnay, you understood the principles, your work is done. Yeah. Now, if you get impatient, that means you did not understand Krambaddha. correct. So when they say कि श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का, means at the time of Shraddha, there is lot of purusharth to look at your own Atma. Is that what that means? Yes. And सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है. So
both that Anant Purushat and Sahaj Samyak hona Darshan means naturally happening. You are not making it happen. making it happen. That's the It happens. key takeaway from all this understanding of all the principles. So, even Let is it the, happen. Don't force it to happen. so is the Anant Purushat also Sahaj? That's what I'm trying to understand. Yes, that is Both also. the Ananta Purushat and Samyak Darshan, दोनों ही All is से Sahaj. होता है. Yes. So both they are saying अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज है. It will naturally happen. You don't make it happen. It will come when it comes, when Yes. when it's supposed to come. And you have done your job when you've understood and believed in the principles. So, Prabhaji, related but not related, is so our entire lives, right, is all planned out based on Krambaddha Paryay. Prabhaji, Yes. yes. because me and my husband were having this discussion, and I was like, I mean, after a point, I stopped talking about it, but I was like, so it's just all based on that one principle, really, that Bhagwan can see past, present, and future. So therefore, there is a Krambaddha Paryay. Yet, the key is it is Krambad, yet nobody is doing for anybody. Bhagwan is also not doing it for us. Yeah, Bhagwan Ma'am, it is The only is difference not is ki that we don't know the future. Okay, Shastra mein aata hai, lot of Pratmanu Yog stories, because when Bhagwan is present, it so happens ki kisi ke man mein question aata, it happens to come in Bhagwan's Vani, and all those things come about in the Pratmanu Yog, right? So, and it gives them nirakulta. कि अब यही होने वाला है, if you believe in it, even if it is bad future, good future, either way, then like you accept it. यही होने वाला था. So now we don't know the future, but yet we know the principle. So it's the same thing. It was fixed. It was there. What was my role in it? Who am I to change things around? And I can't, is the bottom line. And if I think I am, then I'm Mithya Drashti. And it's supposed to reduce your ego of doership, of Correct. ownership of things. That doesn't mean in practical life you're not owning a project, you're not a project lead. Yes, you are. Yet it's all happening. Okay. Ma'am, meaning of kartrutva and gnatrutva. So Please. kartrutva is doership and gnatrutva is knowership. Thank you, ma'am. Anybody has any questions for page 54? If not, we can ask about page 55. In the middle paragraph, okay, so of course you guys all underline the word meaning of Purush and what exactly is Purusharth in the second and the third paragraph of that page. Okay, then underline it from the second line, इच्छा नुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब ये अनुभव करता है कि जगत के परिणाम में मैं कुछ फेरफार कर ही नहीं सकता, तो उसका उपयोग सहज जग से हटकर आत्मसन्मुख. So like I cannot do anything. So why do I bother focusing on that somewhere else? Then Sorry, where is it? Turn inwards. Sorry, where is it, Prabhaji? That is second line of the fourth paragraph of 54 page. From Ichha Anukul karne ki akulta. So what they're saying is that when you realize that really I don't have this burden of doing things for people, I'm not responsible. If you notice, I've noticed this, like when people get, including Bharalji even, with age, this happens to people. If you remember, you have a very, very old grandfather and who was the whole and soul of the family. He was doing everything, taking care of business,
head of the the traditional head of the family, where just that person made all the decisions type of family in the old times. All of a sudden they reach a certain age and they have experienced life so much that they realize कि मैंने सोचा था मैं उस बच्चे को वो बना दूंगा, मैंने सोचा था मैं मेरे ग्रैंडचाइल्ड की शादी वहां कर दूंगा, एंड इसने तो इंटरकास्ट कर ली, इसने तो ये कर लिया. It strikes them that, oh, really, I thought I was doing everything for the family and I'm really not doing. जब अपने मन का नहीं होता है तब people realize कि चीजें हो रही है, मैं नहीं कर रहा. So then all of a sudden you will realize there are a lot of elderly people that become quiet or they go inward. You guys, some of you may have noticed your in-laws or your parents, grandparents, that happening to them. Or have teenage girls and they'll put you in that spot. They'll shut you up. So we all, in some ways, do realize that we can't do it. फिर भी हम इतने ढीठ है ना, we still keep going back thinking, oh, I can do this and I can do that. So, but again, like I said, the worldly effort will go on also of raising the children or doing jobs or doing, whatever needs to be done. But the way you look at it will change, that it's happening. And I mean, I experience it all the time now. Like, okay, something, let's say some event is coming up. I could do tayari 1 month ahead of time, 2 months ahead of time. And still I'm not getting the mood of it until it's almost time. And then you're like, you know what? Whatever is going to happen is going to happen. So I've struggled with, oh my God, I have time right now, but why am I not even feeling like doing anything? And then all of a sudden, a week before, you all are gusto about it and you do it and it happens. So now what was my role in it? I was present when it was not happening. Then I was present when it was happening. And eventually whatever was destined happened. You get the point? So then I had a choice. Either I could be akul vyakul when it was not happening, or I could be happy when the effort was happening. And I could be either sad about the end result or happy about the end result. But is it going to change anything? No. So might as well be content. Or in the local, you would say, oh, might as well be happy with whatever happened. Right? We always want to use the word happy. So people say, oh, acha hi hua fir bhi, or, that type of thing. But really, it's not acha hua ya bura hua. Jo hona. Okay, are you trying to do the local recording on and off? Somebody did that. Okay. So that's the gist of it. And then, so what they're saying is, naturally, when you realize these things, naturally you would go inwards. Ki baar mein main kuch kar hi nahi sakta, so might as well stay by myself. And that's why older people, when they're younger, they are demanding, commanding. All of a sudden, the kids have taken control. Now they have nothing to do. Then they are quiet and more inwards. Okay. So now that's the reason they don't talk so much anymore. Yes, because So they realize they cannot control, which Right. they thought, even though they never could control, but they thought they were controlling the whole family. But now they have let that go also, because they've they realized have to, because the beta bau don't let them be in control. So why should we wait till then? Humko to abhi samajh aa gayi na ki we are not in control. So Prabhaji, the people that are introverts, who don't talk much and don't engage with people, they have this samjan. No, they don't. No. Introverts doesn't mean that at all. Not necessarily, right? It's the fear, ma'am, I guess, at Also some want point. control though. For introverts, it's the fear, I guess, to interact.
Yeah, No, it's introverts are more like necessarily. it's more like they don't They just want get the energy from themselves. They don't necessarily need to get the energy from outside, but it doesn't mean that they're not going to be leaders or want to control or anything like that. introverts just are not so okay. So there are different types of people, right? Who is doing this recording start and stop? Prabhaji, it is me. I apologize. I'm trying Okay. to record, but it's not happening. Okay, no problem. Okay, so what I'm trying to say is that introverts, okay, so let's say you have to review something. My personality will need two other people to talk to and review. There are other personalities who need to sit in their quiet corner, be by themselves, focus. They cannot focus with other noises. And like me and my husband are like that. He needs alone, he needs quiet corner to go do something. I need to blabber. Even to come up to a conclusion, I'll keep talking. And he tells me, why are you talking? If you need to think, just think. But that's how I think. So that's extrovert. So whereas introvert would just be by themselves, need to focus. But that has nothing to do with doership and, no. Okay. Anybody has questions on page 55? Prabhaji, anything you want to share about page 55? So the page 55, the uttar, the prashna ke baad uttar, basically highlight that paragraph. That what is Purusharth? That is page 54, no? What is Purusharth was page 54. No, wo theek hai, but where is Purusharth? Like Bhagwan ka Purusharth kya hai? The guys asked then where is Purusharth? Sab kuch Krambaddha hai, to what is the Purusharth? And that this decision that Jeev ka that Purusharth is also included in Krambaddha is oh my God, okay. I have a meeting at in 10 minutes, another meeting. So we're going to have to wrap up this. Okay. Samavish is? Samavish means included. And if you want, I can read few more pages. I don't Is think so. very good. I Okay, let me We're go still to trying my to- page. I'll make you underline. So that paragraph is important. Basically, what they're saying is कि Bhagwan, to ultimate always stay within himself, is the ultimate Purusha. सब कुछ जान के भी अपने आप में रहना is the most Anant Purusha. Oh. That's how he's able to maintain his Sarvagyata, his Anant Gyan, Anant Darshan, all that. Even though he can see all the par, know all the par. पर पुरुषार्थ स्व में ही होता है, पर में नहीं. So even though you know everything, you still stay within yourself. That is the Purusha. That's the Anant Purusha. That is Anant Purusha. That's why he doesn't react. That is Anant Purushat when Bhagwan is involved. Mm-hmm. The Siddh is involved. Because he has no intentions of doership of others. That is the ultimate in knowing, isn't it? Wow. Know and not do. Mm-hmm. Crazy. Crazy. It's like, wow. So see, the Mithya Drashti has a doership of everything. I did this, I did this, I did this for you, whatever. And the Krambaddha mein janne wala, he doesn't even have the itcha of, I have to know this, I have to know this. He just knows it's just a flow. I just happen to be at this point in the flow, and I'm just going along with the flow. I mean, we already have all these terms. Go with the flow. Oh. They never tell you to you do the flow. Just go with the flow.
So what these pages have said so far is that all this is supposed to be to reduce your ego of doership. So Prabhaji, the Purushat that is the Purushat it takes to stay focused on your dravya. That is the Purushat That is the they talk purushat about. of not having the ego of doership. Stay within yourself. When you cannot do anything in anybody else, obviously there's no reason to be in the par, be in the swa. So in the Panch Samvai, the Purushat they talk about is the Purushat to go within yourself Right. and stay there. So it also applies to Otherwise, it because applies. the task if the task is moksha marg, then that is the purusharth. If the task is going to school, the purusharth is walking up to the school bus and all that. But there's still Panch Samvai comes in there. But still the Panch Samvai comes in there, right? Whatever the outcome is, Panch Samvai is always involved. One of them is Purushat. That's what I'm saying. So one of the Samvais is Purushat, and that Purushat is this. No, for every dravya, if Everything. it's a Pudgal dravya walking to school, every dravya has the Panch Samvai. For the Atma dravya, that Purushat is the focus on Atma. But every dravya, every action in a dravya has The samvais apply to a task. So if the task is moksha, Then it is eternal. right. Then as a Mithya person, then what is my task is to be in Sansar because I'm Mithya person. Then my Purushat is to do this is going Sansari to thing. sansar. I'm sorry. Then your purusharth is going towards being in sansar. So it is whatever our focus. Yeah, whatever the activity is. Okay. So now turn to page 56, second paragraph, last line. स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ. So for me, if I decide about my swadravya and want to know only me, myself, is the Anant Purusharth. Last paragraph. So it No, is saying second Gnan. paragraph, last line. So Gnan mein Anant Purusharth hai. To do Gnan is to know is Ananta Purusharth. Is that what they are saying? No, swadravya ka nirnay karne wale. That means if the task is to do nirnay of swadravya, then knowing is Anant Purusharth. So right now we are doing nirnay, right? So for us, this what we are doing, knowledge of everything, is our Purusharth. Purusharth will depend on the task, outcome, task. See? But I am thinking it is saying Swadravya ka nirnay karne wale Gnan. So Gnan is doing nirnay of Swadravya, and that is Anant Purusharth. Yes. Okay. ठीक है. So let's say अभी हम क्या सीख रहे हैं? क्रमबद्ध पर्याय क्या है? स्पात समवाय क्या है? पर हम निर्णय किसका कर रहे हैं? क्रमबद्ध पर्याय का. आत्मा की. I am soul. आत्मा की. निर्णय क्या कर रहे हैं? I am soul, right? और हाँ, अब हमारा निर्णय हो सकता है आज, पर अनुभव कब होगा? जब उसका काल आएगा. और जब तक काल नहीं आएगा, that means हमारा पुरुषार्थ भी पूरा नहीं हुआ उस तरफ का. Even though we may feel कि मैंने क्रमबद्ध समझ लिया, मैंने वस्तु स्वतंत्र समझ लिया, मैंने ये समझ लिया, वो समझ लिया बुद्धि के लेवल पर, बट उस जब तक अनुभव नहीं होता, मतलब मेरा पुरुषार्थ भी पूरा नहीं हुआ. Now, fourth paragraph, सर्वज्ञ का निर्णय, that again almost last sentence. सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है. What page? Same, page 56, fourth paragraph, last sentence. So underline सर्वज्ञ का, that half sentence. सर्वज्ञ का निर्णय करने में, that means you do निर्णय. See,
the decision is based not just on blind faith. The decision is faith plus understanding plus proving it to yourself. You don't decide something until you've proved it right for yourself. As well as the experience, ma'am, like Krambaddha, we understand, but once we experience it, you know Right. that Yes. is it. Then you've definitely decided. So over here, what they are saying is the Gnan, it is Gnan's Anantvirya job to do Nirnay of Sarvagna. Yes. And that is the Purusharth. That's the real Purusharth. And see, that's why all these books are proving it to you again and again and again. They said ki Sarvagya Bhagwan. See, how would you know about even Krambaddha unless there was Sarvagyata? You wouldn't. Right, That that has proves to that there is exist. Sarvagyata. Has to exist, agreed. Yes. Prabhaji, in the next paragraph, I didn't understand the last line. यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे. What does that mean? If you know that there is Sarvagya, then you would know, or you would believe in all this, and you wouldn't be doubtful about that there is another next janam and all those things. यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ ना आए, ये हो ही नहीं सकता. तो पुरुषार्थ की और शंका नहीं रहेगी, वो समझ गए. But what शंका is नहीं भव होगी की? तो automatically your पुरुषार्थ will go towards that. What? So when you're not doubtful that You're not scared of the next bhav, no, or not no, no, having no. doubts of the next bhav. If you are no doubts about Sarvagya, then you would believe in all this what is said, right? You won't have a doubt that there is that where I'm going to do, what is going to happen in my next life. Now you've understood everything. So even if you go to Narak, who cares? I now have a strong Shraddha on Krambaddha, on what's going to happen. So then automatically my Purusharth will be to be with myself. If I'm within myself, then I don't care where I go, even if I'm in Narak. Samyak Drishti ko Narak bhi bother nahi kar sakta. Bhav ki shanka na rahe means next bhav ki shanka. हाँ, कोई भी भव की शंका नहीं Any रहेगी. bhav, right? Shanka means doubt. Doubt. So no doubts about our gati, future gati. So you're so much into your Atma that you're in the present moment, you stay in the present moment at all times, knowing where you want to go with your Atma, and the rest just unfolds and you accept what it is. And what he's saying is, once you've understood and decided a strong conviction in the Sarvagya, it is not possible that your Purusharth will not happen towards you. But here they are saying, yadi sarvagnya ka nirnay ho to. So you have made that nirnay about sarvagnya. Purusharth ki or So Purusharth you ki won't have shanka na doubts about what is Purusharth, why, Oh, where no is the doubts next about the bhav, Purusharth or your next or bhav. your bhav and all those things. Yes. Or anything else, right? Yeah. यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ न आए, यह हो ही हो नहीं नहीं सकता. सकता. So if you have doubts, that means your nirnay is not truly Not truly complete, there. Yes. or not yes, truly there or something. Yeah. Yes. So then anybody has questions on page 56? Otherwise we'll ask if people have questions on page 57. Nothing on 56. Okay, so page 57, that first paragraph is important. जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध के निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध के सम्यक निर्णय के बिना, so they go hand in hand is basically what Correct. Which line is that? Or the It's first that paragraph? the First paragraph. Jis prakar, I see it. Because Krambaddha really has no role unless Sarvagyata exists. Right. But- Krambaddha exists because of Sarvagyata. Because how do you believe in Krambaddha? Because somebody is able to tell you the future
Right. And if they can tell you the future, that means it exists. Yeah, that was my question, right? To Yeah, Prabhaji. that It's means like- the real exists. Only the light has not fallen on it. कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी समय पुरुषार्थी जागृत होना ही है. So basically, again, that's a statement that says once you truly believe in Krambaddha, that's the second paragraph, last line. So you will lose the doership and ego and go in. And it's wonderful because you're not bothered. Your children are going to experience that, hey, you're not interfering in their matters anymore. It doesn't matter to you whether they're doing right or wrong or what. I mean, so it's one thing to suggest or guide them towards doing the right things. It's another to be attached and be upset when they don't do what you wish for them to do. Krambaddha helps you put an end to overthinking, ma'am. Over-expecting. Exactly, yes. You can still guide your children towards doing the right things, but if they don't, fine. Krambaddha mein aisa hi hona tha. Because anyway, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था. उनका जो होना है वही होना है. Even if they listen to you, you suggested something, oh, कौन है, आराम से उन्होंने सुन लिया. बहुत आज्ञाकारी बच्चा. No, there is no such thing as आज्ञाकारी बच्चा. They just happened to match what you said. उनको भी करना था तो कर लिया. Because, ma'am, at some point, even they are having their own Krambaddha Paryay. I mean, Always they're having their own. Always, right? Always. All right. So, well, now we are out of time today. I would have taken some more, but well, couple of people have dropped out, and then I have today happened to have this. Right. meeting. And Prabhaji, I checked in if people want to do an extra class or if they'll do extra half hour. People are opting for the extra half hour versus doing an extra whole day. So Then we can do 1.5 tomorrow. yeah, I'll put it down that it'll be 1.5 hours long so people can prepare, because the people who responded are the people I'm going to listen to, and that's why I'm suggesting this. People who don't respond Tomorrow we can not even take do- action. Yeah, if people can come prepared to be there for 2 hours, we can try to do even 2 hours. Then we'll finish all this, at least the Prashnottar ke pehla wala part I want to finish tomorrow. Right. And what time are we looking Prabhaji, we out? won't be able to do Prashnottar because we have to go from page 57 to page 67. That's 10 pages for tomorrow. Yeah, but if And we do 2 Prashnottar. hours, definitely we should be able to finish it. 10 pages, yeah. Okay. And what Indian All right, let's timing are stop the we looking out for recording tomorrow? and I'll finish the